By 5 p.m., we had more than 60% voting turnout. However, as we see from our webcasting cameras, voters are still waiting in large numbers in some of the booths, and the polling was temporarily affected in the booths of Bhanjanagar subdivision as well as in Daringbadi block because of heavy rains, thunderstorms. But the power supply has been restored and the polling has resumed. We hope that we will be able to give you uh, very close polling data, as close possible to the actual data by about 11:30 p.m. So when you release that in your media, you have to wait for some time to get that close of poll data. In some cases, the polling parties have already started packing their materials, and they have started returning back also to the receiving centers. We will ensure that their experience in the receiving center is smooth and they are relieved at the earliest. Today we saw very good enthusiasm among the voters of all sections, whether in rural areas as well as in urban areas, whether among the industrial workers or among the tribal people living in remote constituencies. The young voters also turned out in good numbers. The women turned out in good numbers. We also have seen that the transgenders also came forward to cast their vote. There are some photos of that also. We tried to provide a very good and happy experience to all voters. Uh, Volunteers were engaged in all polling stations. Adequate drinking water was provided in all polling stations. Arrangement for fast aid was also made available in all the polling stations. In all polling station locations, ASA Didis were engaged. Mobile health teams also touched the booths at regular intervals. Then, whenever there were defects with the electronic voting machines, especially during the mock poll period, those were replaced quickly. In this phase, we saw good participation of women polling personnel. Some of them were initially a bit apprehensive, but they also stayed in the booth. We made their stay safe. That was our most important priority, to ensure that our women polling personnel are safe. And we also did extra training for them at some of the places, because many of them were performing duties for the first time. And today our webcasting was very stable, unlike the first phase, because in the first phase we had problem of 4G connectivity, but in this phase consistently we were able to get live web streaming from 57, 58, 59% of the booths. We could keep a very close watch over the poll proceedings, and in the booths where the polling is over, it has been very peaceful, it has been very orderly, and the people have also enjoyed voting. And where the polling is also continuing now, we have brought in additional polling personnel. We have brought in additional police force also, to see that the polling is completed at the earliest and the polling parties return very safely to the reception centers. So thank you. बंधुगण, आपण मैंने जेपरी जानती जे आज मोर आज संध्या 5टा सुधा हाराहारी प्राय 60% मतदान चली, किंतु आमर अधिकांश बूथ रे पोलिंग शेषर समय होची संध्या 6टा पर्यंत। तेणु आमे आमर जो क्लोज ऑफ पोल डाटा ताकू आमे कंटिन्यूअसली अपडेट करि चलिबु, एवं प्राय राति 11:30 11:40 बेलू क्लोज ऑफ द पोल डाटा आमे देई परिबु। सेटा मध्य बेसिकली सेक्टर ऑफिसर मान ठारो जो डाटा कलेक्शन हुए, कारण आमे इलेक्शन समय आमे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मान को एग्जैक्ट डाटा पई बदर करू नाही। प्रिजाइडिंग ऑफिसर माने जेतेबेले
रिसेप्शन सेंटर को ईवीएम एवं अन्य पोलिंग मशीन को पोलिंग मटेरियल धरिकी आसबे तांकु आमे प्रत्येक बूथ रे केते मेल केते फीमेल केते ट्रांसजेंडर वोटर देइचंती से डाटा आमे संग्रह करिवु ताकू आमे एंड ऑफ पोल डाटा हिसाब रे काली सुधा आपण मान को आमे जणै देबु एक्जेक्टली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एवं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज केते परसेंट वोटिंग हेची। आज आमे बहुत चेष्टा करिथिलु जे वोटर मान को गोटे भल अनुभूति देबा पई आज पाग मध्य टिके हॉट थिला एवं केतेक अंचल रे ह्यूमिड मध्य थिला एवं लास्ट बेल को आमे देखिलु जे भंजनगर रे एवं दारिंगबाड़ी रे बहुत वर्षा हला जोथि पई पोलिंग टिके किछि समय पई बाधा प्राप्त होइतिला किंतु सेठी वार फुटिंग रे इलेक्ट्रिसिटी के रिस्टोर करा जाईछि एवं शेषो बूथ रे जेते वोटर आसीथिले समस्ते केमिति सुरक्षित रे वोट देई फेरिबे सेथि पई बंदोबस्त करा जाईछि एवं एई फेज रे हमर शांति श्रृंखला सहित निर्वाचन समाप्त होईछि। आमे देखिलु जे सबु वर्गर वोटर माने बहुत उत्साह सहित आसिले युवा वोटर माने महिला वोटर माने आमर जो माने एल्डरली सिटीजन सेमानक भितर आज बहुत उत्साह देखिबा को मिलिला। पीडब्ल्यूडी वोटर माने आमे सेमानक पई निशुल्क परिवहन व्यवस्था मध्य आमे करिथिलु। प्रत्येक बूथ रे वॉलंटियर माने अति उत्साह सहित कार्य करथिले। आमर का भा को गोटे जगह रे पोलिंग कर्मचारी माने आमे देखिलु टिके तांको रिप्लेस करिवा दरकार पड़िला नहले आमर समस्त पोलिंग कर्मचारी माने बहुत से माने निष्ठार सहित कार्य करिसंती एवं विशेष करी आमर जो वुमेन पोलिंग कर्मचारी माने जदि बा प्रथम थर पई से माने ड्यूटी परफॉर्म करूथिले केतेक भितरे टिके आशंका मध्य रहितिला किंतु आमे सेमानकु सपोर्ट देलु एवं सेमाने बहुत खुशीर सहित सेमाने तांकर बहुत कॉन्फिडेंस सहित सेमानकर कार्य निर्वाह करिसंती। केतेक बूथ रे पोलिंग समाप्त हो जाइछि तेणु से माने मध्य एबे तांकर रिसेप्शन सेंटर को फेरिबा आरंभ करिसंती। मु आशा करूछि जे आमर जो मतदान हार आमे जो कोचु 5टा पर्यंत हाराहारी 50% थिला ताटू यह यथेष्ट बढ़िबो एवं मु आपण मानक माध्यम रे एई फेज रे नियोजित थिबा आमर समस्त पोलिंग कर्मचारी मानकू एवं आमर जो अछंती सिक्योरिटी पर्सनल समस्त को मु साधुवाद जणाउछि एवं वोटर माने मध्य से माने बहु संख्या राशि मतदान करिथिबारु एवं आमर गणतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ करिथिबारु आपण मानक माध्यम रे मु से मानकू साधुवाद जणाउछि एवं आपण माने मध्य आमर जो वार्ता जो अच्छी जो सकाळ जेतेबेले आमे कहलु जे गाँ की सहर जेउटी था निजर भोट निश्चय दियो आउ आमर पश्चिम ओडिसा लोक भाई भणी मान आमर जो थिला जे मिलीमिशी हेमा जोट सभे जिमा देमा भोट यही वार्ता को आपण आमर प्रत्येक अंचल रे आपण के माध्यम रे पहुंचाइले सेति पे आपण मानकू मध्य विशेष धन्यवाद। थैंक यू।